Please take your seats. Good morning to all of you and good morning to all those who have joined us online. So we have understood the basics of a few topics and we'll now build those topics in this class. Okay. Now, before we move into that, there is one simple thing which is left. Let's cover that also. Remember, as we closed the last class, I was talking about something called humidity. Humidity simply refers to the amount of water vapor present in a unit parcel of air. Okay. Now, humidity has three variants. One is absolute humidity. Then there is specific humidity. And the third one, perhaps the most important one, is the relative humidity. And this helps us in understanding precipitation, condensation, precipitation, and other kinds of weather and climatic phenomena. Now let's try to take them one by one. Absolute humidity simply means the amount of water vapor present in a unit volume of air. Now, a unit volume of air could be of any unit. You can consider it of any unit. So, unit volume of air, उसमें जितना भी water vapor होगा, that is absolute humidity. Got it? Now, say for example that this is a unit volume of air, and suppose its temperature is T. At T temperature, the moisture holding capacity would be something significant. Do you understand that? Remember this, that the temperature and the moisture holding capacity are directly related. Hotter the air, greater is its moisture holding capacity, and vice versa. So look here, very carefully. At any given temperature T, suppose this unit parcel of air contains 10 grams of water vapor. Then I'll say that its absolute humidity is 10 grams per unit volume at a given temperature T. Got it? That is absolute humidity. मतलब absolute है ये, कोई relative नहीं है. We are not comparing it with different circumstances or different scenarios. We are giving a snapshot in time, and we are telling that at any given point in time, this would be the temperature of the air parcel, and at the temperature, it actually contains this much. That is absolute humidity. Got it? Now, remember this, that the moisture holding capacity is directly related to the temperature. Hotter the air, greater is its moisture holding capacity. Specific humidity only give values to absolute humidity. Like say, for example, when we talk in our day-to-day parlance, also people would say that please be more specific. When I say specific, अगर मैंने जैसे like say, for example, if I say that at what time you will meet me, if you just say evening, now that's a very subjective thing, right? So I would say be more specific. So you can give me a time, like say 6 in the evening or 7 in the evening, something like that. Okay. So specific humidity simply means when we add real values to the absolute humidity. So absolute humidity was the amount of water vapor contained in per unit volume of air at a given temperature. Now I'll give values to these. Okay. So the amount of water vapor contained in grams in per kilogram of air, that is specific humidity at a given temperature, and I will specify that temperature also, say 10 degree centigrade. It means I'm actually adding value and not speaking in generic terms. Got it? Like say for example, this is an air parcel and its temperature is 10 degrees Celsius and it is holding, say how much? Say 1 gram of water vapor. Got it? And it is 1 kilogram of air. So in 1 kilogram of air at a given temperature 10 degree, there is 1 gram of water vapor. That is specific humidity. Now, relative humidity means that how much amount of water vapor the air parcel is holding in relation to how much it can hold at that given temperature. It means there is a concept called humidity capacity. Think of this. This is an air parcel, and at 10 degrees Celsius temperature, its maximum moisture holding capacity is say 10 grams. Got it? So I would say its H cap is 10 grams at 10 degrees Celsius. It means humidity capacity.
is 10 grams. That's the maximum moisture holding capacity. But actually, it contains how much? Suppose it contains only 2 grams. That's what it contains at that given temperature. Suppose it is resting over a surface जहाँ पे थोड़ा पानी था वो तो evaporate हो गया, पानी है ही नहीं. So how would you get more moisture into the air parcel? Are you getting it? So just see this. So here the H cap becomes how much? 10 grams. But the absolute humidity is how much? The real humidity present is, actual humidity is 2 grams. So I can say the actual humidity divided by the maximum moisture holding capacity, that is relative humidity. Relative humidity means actual humidity that is present in the air parcel divided by its maximum moisture holding capacity at that given temperature. Got it? So here in this case, RH would become how much? It would become 2 grams divided by 10 grams. And 10 grams is H cap. Can I say so? So it would be H cap. And this is actually what? Absolute humidity. So I can say AH. So relative humidity becomes absolute humidity divided by humidity capacity. Absolute humidity मतलब कितना actually है और humidity capacity मतलब कितना कर सकते हैं. Do you understand that? Humidity capacity is always potential, whereas absolute humidity is the actual. So actual by potential, that is humidity capacity. Got it? Now if I just take it, it would be 0.2. That would be relative humidity. अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, relative humidity equals to absolute humidity by H cap, I multiply it by 100, I convert it into percentage, then it becomes how much? 20%. You get it? अब ध्यान से देखना इस बात. That if I add more moisture to this air column, suppose I keep adding 2 grams more, then can I say relative humidity from 20% will grow to 40%? The next relative humidity would be 40%. I add 2 more grams. Can I say it would be now 60%? 2 more grams. Can I say it would be now 80%? 2 more grams. 2, 2, 2, 2, 2. It would become 10. So it would be 10 by 10. It means 100%. 1 into 100 is 100%. So relative humidity, when it becomes 100%, they say that the air is saturated. इससे आगे अब और उसकी कैपेसिटी ही नहीं है मॉइस्चर होल्ड करने की. You understand that? In every other case so far, the air was undersaturated. Here the air becomes saturated. The temperature at which the air becomes saturated is known as the dew point temperature. Now keep this in mind that dew point temperature and dew are two different things. Dew point temperature is actually a temperature, whereas dew is a form of condensation. You get that? Dew, frost, fog, clouds, these are form of condensation. So dew point temperature is that temperature at which the air becomes saturated. Do you get that? Now if I add more moisture to this, suppose I add 2 more grams to it, then relative humidity becomes actually 120%. Do you understand that? Then we say that the air is super saturated. Only when the air becomes super saturated, condensation takes place. Otherwise, condensation will not take place. It means vapor getting converted into water droplet. That would happen only when the air becomes super saturated. It means the relative humidity surpasses 100% or surpasses 1. ऐसे होगा ना, ऐसे 0.2 है यहाँ पर देख लो तो अंडर सैचुरेटेड हो गया. यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा. ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ that relative humidity can be of 3 types, like relative humidity less than 1, relative humidity equals to 1, and relative humidity more than 1. If it is more than 1, it is super saturated. If it is equals to 1, it is saturated. Under saturated if it is less than 1. ठीक है. Condensation would take place only when the air becomes super saturated. And the temperature at which the air becomes saturated is known as dew point temperature. ठीक है. Now how can we increase the relative humidity of an air parcel? First way तो हमने देख लिया, by adding moisture. I kept on adding moisture.
The second way is by decreasing temperature of the air column. If I decrease the temperature of the air column, the humidity capacity will also fall. It means will the denominator will keep on decreasing. If the denominator, ये denominator है ना, कहाँ गया? ये denominator है ना. If that keeps on decreasing, then the fraction will keep on increasing. C set है. ऐसे देखो. ऐसे देखो. Simple सी बात. ये एक एयर कॉलम है और इसका टेम्परेचर हम लेते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड और मान लेते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी 10 ग्राम्स है. एक्चुअली इसमें 2 ग्राम्स है. फॉर द सेक ऑफ ऑपरेशंस आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर 1 डिग्री कम करता हूँ तो इसकी कैपेसिटी भी 1 ग्राम कम हो जाती है. ठीक है. सो एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स कैपेसिटी बिकम 5 grams. Do you understand that? So if I take that further down to 2 degree centigrade, what is its capacity then? 2 grams. You understand that? So मैं यहाँ पे moisture add नहीं कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? Temperature घटाता जा रहा हूँ. If I do that, then obviously you can understand relative humidity would then become, in this case, at 2 degree centigrade, if the temperature air column का जो ये समझ लो T1, T2, T3, ठीक है? अगर if that's the case, in T3 case, relative humidity would become what? Humidity capacity which is 2 grams. And absolute humidity which is 2 gram, which would be 1. RH equals to 1 means what? Saturated. And here the dew point temperature would be what? 2 degrees centigrade. This is the temperature at which the air is becoming saturated. Further I drop it, suppose I take it 1 degree centigrade. Then this becomes 1 grams. In that case, relative humidity becomes 2 by 1, which is RH more than 1. सुपर सैचुरेटेड. और जो वो एक्स्ट्रा होगा वो क्या होगा? वो कंडेंस हो जाएगा क्योंकि अब वो एयर उसको रख नहीं सकता. यू गेट दैट? सो कंडेंसेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द एयर बिकम्स सुपर सैचुरेटेड. याद रखना. एंड सुपर सैचुरेशन कैन अकर इन टू वेज, ईदर बाय addition of moisture or by subtraction of temperature from the air column or by both. दोनों करते जाओ, मॉइस्चर भी ऐड करते जाओ और टेम्परेचर भी घटाते जाओ. यू गेट दैट? नाउ this is what happens. Suppose an air parcel absorbs a lot of moisture at the ground level and then it rises, it rises convectively and then it cools adiabatically. As it keeps on cooling, what happens? The H cap keeps on dropping. So as an air parcel rises, can I say its RH generally increases? That's how condensation actually takes place at some height. And when it becomes super saturated, then the rainfall starts. Then only you can understand that water droplets grow heavier in size, so much so that they cannot remain in suspension in free air and they fall hurling under the impact of gravity. That is nothing but precipitation. समझ में आ रहा है? तो यही है खेल इन तीनों ह्यूमिडिटीज का. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी. सबसे ज्यादा काम का कौन सा है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी. इसलिए अगर आप देखोगे, suppose there is a weather report being made somewhere, you would see that they will always talk about relative humidity. They will not talk about absolute humidity. And keep this in mind, relative humidity more than 80% is dangerous for humans. You will feel a lot of stickiness if the relative humidity grows a lot. Relative humidity grows a lot, you feel a lot of stickiness. Means what? It means, आप ऐसे सोच कर देखो, जैसे जब आपको भूख लगती है तो आपके सामने 3 रोटी पड़ी हुई है और आपको भूख लगी है तो पहली रोटी आप बहुत तेज खाते हो, है ना? जनरली स्पीकिंग, देयर कुड बी एक्सेप्शंस. जनरली आप तेज खाते हो क्योंकि आपको भूख सबसे ज्यादा लगी हुई है. बट जब आप अपना खाना खत्म करने के ओर बढ़ते हो, देन द स्पीड ड्रॉप्स. व्हाई? बिकॉज यू आर बीइंग सेशिएटेड. आपको आराम मिल रहा है जैसे जैसे आप खाते जा रहे हो. So the rate of evaporation also, keep this in mind. The rate of evaporation keeps on changing as the air parcel is moving towards higher humidity levels, relative humidity levels. समझ में आ रहा है? तो अगर air already 80% saturated होगा, तो उसकी evaporational rate थोड़ी कम हो जाएगी. If that's the case, if suppose आप काम वाम कर रहे हो, आपको पसीना आया हुआ है, तो वो पसीना सूखने में भी टाइम लगेगा. And you will feel a lot of stickiness. That's why survival would be very difficult. Equatorial zone में अगर आप जाओगे तो relative humidity बहुत ऊपर है. That's why the equatorial areas, despite receiving good temperature, good rainfall, are sparsely populated. Amazon के जंगलों में चले जाओ, Congo में चले जाओ, Malaysia में चले जाओ, आपको कोई heavy population नहीं मिलेगा वहाँ पर, because the relative humidity is unbearable in those locations. Do you get it? बात समझ में आ रही है? Relative humidity has an adverse impact on human health. The air becomes super saturated, then and thereafter the condensation process takes place. ठीक?
तो यहाँ तक हो गई सारे कॉन्सेप्ट्स की बातें. Now let us. Yes, go on. So, increase of temperature would increase the relative humidity. Temperature will increase. No. No. Increase in temperature will always drop the relative humidity. ऐसे सोच कर देखो ना, increase in temperature होगा तो humidity capacity बढ़ेगी या घटेगी? It will increase or decrease? बढ़ेगी ना. अगर denominator बढ़ रहा है तो वैल्यू गिरेगा या चढ़ेगा? समझ में? ठीक. चल. Look here. There is something called the tricellular meridional model or the distribution of pressure belts and winds over the surface of the earth. Now winds have three categories. First, primary winds. Second, secondary winds. Third, tertiary winds. There could be further classifications, but as far as general studies is concerned, only three classification of winds would be sufficient. Okay. Primary winds are those winds which are present at the global level. मतलब अगर आप इन winds को इकट्ठे कंसिडर करोगे तो पूरा ग्लोब कवर हो जाए. जैसे कि think about the trade winds, the westerlies, polar easterlies. They are known as primary winds. Okay, they are also known as prevailing winds because they blow throughout the year. आप कभी भी चले जाओ, you will find. Secondary winds or secondary circulation, this is also sometimes referred to as primary circulation. Secondary circulations are atmospheric systems within the primary circulations. Do you understand that? जैसे कि cyclone, monsoon, they all fall under secondary circulation. Like they have global presence, they have regional presence. जैसे monsoon अगर आप देखोगे, it impacts the entire Indian subcontinent. ठीक है? So it has a regional presence. Tertiary winds are the local winds which have presence at a local level, and both secondary and tertiary winds are season dependent, whereas primary winds blow throughout the year. Tertiary wind के कुछ example हो सकते हैं land breeze, sea breeze, loo, ये सब सुना है ना. ये कुछ ऐसे हैं जो winds they are the local winds. We'll talk about the classification of winds further, पर उसके लिए पहले हमको सेकेंडरी सर्कुलेशन समझना जरूरी है, पर उससे पहले हमको जरूरी है कि प्राइमरी सर्कुलेशन होता क्या. ठीक है. सो दिस प्राइमरी सर्कुलेशन और द प्रिवेलिंग विंड सिस्टम is also known as the tricellular meridional model. The tricellular meridional model क्यों है ये हम समझेंगे, बट उससे पहले ये देख. Okay. Now let's assume this is the equator. This is 0 degree, and let's assume this is 10 degree north, 10 degree south. It means I have marked the equator, the north pole, and the south pole. At the equator, sun rays are how? Oblique or direct? Direct. It means concentration of heat per unit area is high. It means there is convective rise of air. And whenever there would be convective rise of air, will that happen throughout the equator? Will that happen, this convective rise, will that happen throughout the equator? If that happens, then the entire equator will have a low pressure section. This low pressure section is known as the equatorial low pressure belt. ठीक है, क्योंकि एक बेल्ट की तरह है. आप देखो तो बेल्ट पहनते तो बेल्ट की तरह है ये अर्थ के. So look here, this will be a belt actually. This is the equatorial low pressure belt, and here I'm saying that the air is rising from the equator. ये हर जगह राइज हो रहा है. मैं आपको इस लोकेशन पे दिखा रहा हूँ बस. And you know, air keeps on rising till the time it is warmer than its surrounding. If it becomes equal in temperature with respect to its surrounding, the air spreads. Okay, so the air is spreading, and the spread would take place on both the sides. Similarly, over the poles, can I say the air would sink because it's a high pressure zone? Here also the air would sink. अब अगर यहाँ खड़े हो तो ऐसे खड़े होगे ना, ऐसे खड़े होगे ना, तो सिंक ही हुआ ना आपके ऊपर ये. So look here. Now
Look here, as I told you that the air would keep on rising till the time it is warmer than its surroundings. Once it becomes equal in temperature with respect to its surroundings, it spreads like this. Okay, and then it becomes colder than its surroundings, and when that happens, the air would sink. And wherever air sinks, what kind of pressure is created? High pressure. जहाँ पे air rise होता है क्या create होता है? Low pressure. तो just इसका उल्टा क्या होगा? High pressure. Do you understand that? So look here. I'm assuming that air is sinking here. Similarly, air is sinking here, and I see that it sinks around 30° north latitude and around 30° south latitude. If that happens, then I would say that these areas are high pressure zones. Got it? Tropics mean the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Tropical zone means the zone between the tropic. It is very near to tropics. This location is known as subtropical location. And what kind of pressure is being made here? High pressure. तो इसलिए हम इसको कहते हैं subtropical high. इसको हम क्या कहते हैं? Equatorial low. Then we would have a subtropical high. So we have two subtropical highs and one equatorial low. ठीक है? अब एक चीज देखो, एयर जो सिंक हो रहा है जमीन पर, वो जमीन से टकरा के स्प्रेड भी तो होगा. And remember, high pressure areas are zones of divergence, whereas low pressure areas are zone of convergence. मतलब यहाँ पे air converge हो रहा होगा और यहाँ से air diverge हो रहा होगा. Do you understand that? So let's assume this is the high pressure zone. This is a high pressure zone. This is also a high pressure zone. This is a low pressure zone. And you know, these are nothing but they appear like isobars. Do you get it? और मैंने आपको बताया था आइसोबार जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही हो हमेशा. And then winds would be exchanged between the isobars. So this is high pressure. Wind would always blow from high pressure to low pressure. यहाँ पे भी wind would blow from high pressure to low pressure. ये spreading तो इधर भी हो रही होगी. So here also the wind is spreading like this. Here also the wind is spreading. For now I am not considering these two. I am only interested in these two. So here wind is blowing from high pressure to low pressure. Here also wind is blowing from high pressure to low pressure. But what hemisphere is this? Northern hemisphere. And in the northern hemisphere, you know, there is a force called Coriolis, which will make the winds blow like this. Whereas in the southern hemisphere, there is a force called Coriolis, which will make the winds blow like that. And if I take that for the entire stretch, then this is how I would get the winds. Can you understand this? This is how I would get the winds, which is done. In geography, we name a wind from the direction from which it comes and not to the direction to which it goes. In geography, we name a wind from the direction from which it comes and not to the direction to which it goes. अगर देखो, ये है मान लो आप west और ये है east. If the wind is blowing from west to east, we will call it westerlies. If it is blowing from north to south, we will call it northerlies. If it is blowing from south to north, we will call it southerlies. ये geography का एक convention. ठीक है? तो यहाँ पर देखो, if I see these winds are blowing from northeast to southwest, so I will call them northeasterlies. You understand that? But इनके लिए एक नाम है, और वो नाम जो है, that is northeast trade winds or northeast trades. Here they would be known as southeast trades because they are blowing from southeast to northwest. Here they are blowing from northeast to southwest. These trade winds play a great role in understanding the Indian monsoon. यहाँ तक बात clear हो गई? ठीक है? तो चलो अब यहाँ पे भी मान लेते हैं that the air after striking the ground will spread. Actually, it would spread like this. ऐसे सोच कर देखो. As air is sinking over the poles, spread like this. Do you understand that? I am just showing you one stream of that air. So look here. This air would spread, and one stream of that air would come towards the equator. ऐसे होगा ना, towards the equator आएगा ये. इधर भी वैसे होगा. It will come towards the equator. But you know, we are in which hemisphere? In the northern hemisphere. So this will turn like what? It will turn towards its right. इसके right की तरफ.
Similarly, this will turn towards its left. What kind of air would be this, which is coming from the poles? Hot air or cold air? Extremely cold air. Do you understand that? Similarly, ये वाला wind जो यहाँ पे सिंक हो रहा था, उसका तो एक ही हिस्सा हमने कंसिडर किया जो इक्वेटर की तरफ आ रहा है, कुछ हिस्सा तो पोल्स की तरफ भी जाएगा. As the air spreads, ऐसा होता है क्या? If the air would strike the ground, all of air would go in one direction. As the hogan, it will spread across all the directions. I am just taking two standard directions for the moment. Okay? तो अगर कुछ air इधर आया है, तो कुछ air इधर भी जाएगा. And this air would go like this, but we are in the which hemisphere? Northern hemisphere. So it will turn towards its right. Similarly, यहाँ पे भी air ऐसे जाएगा कुछ, but we are in which hemisphere? Southern hemisphere. So it will turn towards its left. अब यहाँ पे देखो मैं ये वाला section आपको दिखा रहा हूँ. At around 60 degree north and at around 60 degrees south, these two air meet with each other. Okay, and the air which is coming from mid latitudes से आ रहा है, that would be warm. You understand that? And the air which is coming from the poles would be cold. You get that? The air which is coming from the equator would be, or at lower sections यहाँ पे जो air आ रहा है, that would be hot. It will be hot, warm and cold. समझ में आ रहा है? तो अब इसको लेते हैं बस, ये वाले warm air को और cold air को लेते हैं. So this is in the northern hemisphere. Look at this. This is how it is coming, and this is how that one is coming. This one has to be called as northeasterlies again. But हमने नॉर्थ ईस्ट जैसा ये टर्म यूज कर चुके हैं इस विंड्स के लिए, ठीक है. इसकी वजह से उनको एक जो नाम दिया गया है, दैट इज पोलर ईस्टर्लीज, और इनका नाम होना चाहिए साउथ वेस्टर्लीज. यू अंडरस्टैंड दैट? बट इनको सिंपली बोला जाता है वेस्टर्लीज. यू गेट इट? अब देखो, वेस्टर्लीज आर व्हाट? दे आर, show you like this. Look at this. This is how westerlies are. They are warm. Whereas this is how polar easterlies are. They are cold. Do you understand that? And now you tell me, when warm air and cold air would meet each other, what does it form? Fronts. Remember? And what kind of warm air, what kind of air would rise? Warm air would rise. Got it? So in this case, can you understand that the warm air would rise whenever they would meet? So I'm just showing you that. Here can I say that the warm air is actually rising? Can I say that? Here also the same thing would happen. The warm air would rise. It will keep on rising till such time it is warmer than its surrounding. The moment it becomes equal in its temperature, it would spread, and the spread would be in both the sides. And when it becomes colder, it would sink. Do you get it? Similarly, here also the same thing would happen. So can you see? हर जगह पे एक convective cell बन रहा है. Can you see this? This is how the air is. This air is coming here. This is the northeast trade. This is the westerlies. This is the polar easterlies. समझ में आ रहा है? और ये कहाँ पर बन रहा है? All of that is forming within the troposphere. हम troposphere में ही हैं, क्योंकि convective mixing कहाँ होती है? Troposphere में. This is the convective cell, और इन cell का नाम है. This is known as the Hadley cell. This is known as the Ferrel cell. याद आ रहा है Ferrel? It's the Ferrel's law. This is known as the Ferrel cell, and this one is known as the polar cell. जैसे इधर भी होगा एक Hadley cell. Hadley cell. Then you have got the Ferrel cell, and you have got the polar cell. इधर भी वही होगा, आप देखो. This is how the wind would be. In the wind, this is how the wind is. Got it? और ये सब कुछ कहाँ पर हो रहा है? Troposphere में हो रहा है. And troposphere is separated from the stratosphere by what? Tropopause. Tropopause ये है. समझ में आया? ये tropopause है.
देखो ये डायग्राम शायद आपको मिले नहीं बुक्स में, बट ये समझ में आ रहा है, ये ट्रोपोपॉज है। गॉट इट? ध्यान से समझ लो इसको। अब आप देखो ट्रोपोपॉज की हाइट हमेशा ज्यादा होगी कहाँ पे? इक्वेटर पे, और पोल्स पे उसकी हाइट कम होगी। इट्स अ स्लैंटिंग लाइन लाइक दिस। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज द ट्राइसेल्युलर मेरीडायोनल मॉडल। ओके, और ये क्या होता है? अपना इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये सब ट्रॉपिकल हाई। जहां पे एयर राइज होगा वो लो होगा या हाई होगा? एयर राइज हो रहा है, लो प्रेशर होगा, एंड दिस इज द सब पोलर लोकेशन। Okay, it's near the poles. This is subpolar location. This is known as the subpolar low. This one again is the subpolar low, and this is the polar high. This is again the polar high. Do you get it? So you have these pressure belts. How many pressure belts? 7 pressure belts. 2 polar highs, 2 subpolar lows, 2 subtropical highs, and 1 equatorial low pressure belt. You get it? So there are 7 pressure belts, and how many types of primary winds? 3 types: trade winds, westerlies, and polar easterlies. How many cells? 3 cells: Hadley cell, Ferrel cell, and the polar cell. अब एक चीज है, इधर बड़े ध्यान से देखो। इस लैटिट्यूड, इस लॉन्जिट्यूड पे ऐसे अज्यूम करो, एक लॉन्जिट्यूड अज्यूम करो, यहाँ पे एयर राइज होगा, स्प्रेड होगा, सिंक होगा, फिर इधर ब्लो होगा, फिर राइज होगा, यहाँ से राइज हो रहा है, यहाँ पे सिंक हो रहा है ना, यहाँ पे राइज होगा, फिर ऐसे ब्लो होगा और फिर सिंक होगा. इट मीन्स कैन आई से हियर यू गेट द हेडली सेल, हियर यू गेट द फेरल सेल एंड हियर विल गेट द पोलर सेल. सबसे बड़ा कौन सा सेल होगा? हेडली सबसे बड़ा होगा साइज में, है ना, ऊंचे तक जाएगा ना, एयर बहुत ऊपर तक जा रहा है यहाँ पे. फेरल की हाइट क्या होगी? उससे थोड़ी कम. पोलर की हाइट और कम होगी. अब समझ रहे हो? तभी तो स्लैंटिंग लाइन बनेगा ट्रोपोपॉज का. ध्यान से देखो, यहाँ पे एयर ज्यादा ऊपर जाएगा ना, और जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे उसकी राइज कम होती जाएगी. ऐसे सोच कर देख लो. तो ये जो हेडली सेल है वो ऐसा बनेगा, फेरल ऐसा बनेगा, पोलर और छोटा बनेगा. ठीक है. और उसके ऊपर क्या होगा? यहाँ पर ट्रोपोपॉज. ट्रोपोपॉज कैसा होगा? स्लैंटिंग लाइन. समझ में आ रहा है? अब देखो हर लॉन्जिट्यूड पे ये चीज बनेगी, तीनों सेल हर लॉन्जिट्यूड पे बनेगी, कहीं पे भी देख लो इसको. So it's tricellular meridian because longitudes are also known as meridians. 0 degree longitude is known as prime meridian. ठीक है. So this is known as tricellular meridional model. एक बार जीएस में पता चल चुका है, मेंस और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं. Do you get it? अब हम इन चीजों को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे. Look, at the equatorial low pressure belt, I told you this is what is happening. The northeast trades and the southeast trades, they are meeting each other. Okay, so this is, can I say, this is the low pressure belt, and low pressure areas are also known as, remember, zones of converge. लग भी रहा है converge हो रहा है यहाँ पर. ठीक है. But actually if I zoom in into the equatorial low pressure belt, belt कैसा होता है? Belt ऐसी होता है ना, ऐसी होता है ना बेल्ट. और यहाँ पे समझ लो आप, एक बकल है उसका, बेल्ट तो ऐसे ही होता है ना, इसका एक नॉर्दर्न एज होगा, एक सदर्न एज होगा. तो वैसे ही सोचो. Look at this. This is the equatorial low pressure belt, and its northern edge and the southern edge are where the trade winds are coming in and striking. पर इक्वेटर पे, इक्वेटर यहाँ पे होगा, समझ लो 0 डिग्री. इसको हम मान लेते हैं 5 डिग्री नॉर्थ, इसको मान लेते हैं 5 डिग्री साउथ. तो 5 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में कौन सा बेल्ट होगा? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. इट्स अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस. दिस इज द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स, दिस इज द साउथ ईस्ट ट्रेड्स. अब देखो ये ट्रेड विंड्स ऐसे आ रहे. ठीक है. बट बिफोर these winds could meet, they are coming from higher latitude to lower latitude. The sun rays are becoming more and more steeper. As a consequence of that, what happens is these winds become warm. And warmer winds means lighter winds, and lighter winds mean rising winds. So these winds actually never meet.
because if they meet they will end the low pressure area. They come to this northern and southern boundary and from here they start rising like this. जो मैं आपको बोल रहा था इक्वेटर से राइज हो रहा है एयर, एक्चुअली वो नॉर्दर्न और सदर्न बाउंड्री ऑफ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से राइज हो रहा है. समझ में आ रहा है? That's why it is also known as the intertropical zone of convergence or the intertropical convergence zone. ठीक है, इसकी दो बाउंड्री है. This one is the NITCZ, Northern Intertropical Convergence Zone, and this is the Southern Intertropical Convergence Zone. बड़ा रोल है इसका भी when we are trying to understand monsoons. Got it? अब एक चीज देखो, it means there are no winds in the intertropical convergence zone. उसके अंदर तो कोई wind नहीं है. It's a zone of calmness. This area is known as the doldrum. ठीक है, doldrum का मतलब होता है इंग्लिश में कि nothing is moving. ठीक है, अगर कोई ये बोल दे that my preparation is in doldrum, इसका मतलब nothing is moving. समझ में आ रहा है? तो ये doldrum तो कई बार होता है ना कि पढ़ बहुत रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, एग्जाम भी दे रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है. तो देखो ये है doldrum. Do you get it? Doldrum means a zone of calmness within the northern and southern intertropical convergence zone. But very recently, climatologists and meteorologists, they have found a feeble wind blowing within the doldrum. Feeble wind की मतलब होता है very weak wind in the doldrum and is blowing from west to east. इसका नाम क्या होना चाहिए? Westerly. और कहाँ पर है ये? इक्वेटर पे. इसका नाम क्या है? इक्वेटर वेस्टर्लीज और इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज. These winds often help the people. These winds often help in understanding the climatic phenomena in the equatorial region. ठीक है, अब एक चीज देखो, इनका नाम हम ट्रेड विंड्स क्यों बोल रहे हैं? ट्रेड विंड्स इसलिए बोल रहे हैं that in the olden days we had only sail ships. ठीक है, सेल होता था ना, कपड़ा होता था एक बहुत बड़ा, and sail ships can move only with the help of winds. आप सेल डालते थे, उस पे हवा का दबाव पड़ता था और वो जहाज आगे जाता था. Do you understand that? And अगर ऐसे देख लो आप, the old world ऐसे करके देख लो आप कि if you look at all the ancient civilizations, Mesopotamian, ऐसे ऐसे करके देख लो, इजिप्शियन, ठीक है, मेसोपोटामियम, सुमेरियन, हड़प्पन, ठीक है, चाइनीज, जितने भी सिविलाइजेशन है आप देखो सब कहाँ पर है? इसी रीजन में है, सब ट्रॉपिकल रीजन में है. सबसे ज्यादा ट्रेड कहाँ होता था? इनके बीच में. इवन इफ यू लुक एट द ग्रीक्स, वो बहुत पास है. You understand that? Remember Indo-Greeks coming to India, all of that. चलो वापस. So the most of the trade happened in that area. That's why these winds are known as trade. Do you get it? अब एक चीज देखो, ये विंड, ये जहाज जब आ जाते थे कहाँ पर? डोल्ड्रम्स में, तो ये जहाज फंस जाते थे क्योंकि वहां पे तो कोई विंड ही नहीं है और वो बहुत धीरे धीरे मूव करते थे वेस्ट टू ईस्ट. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ वेरी वीक विंड कॉल्ड द इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज. अदरवाइज इट्स very calm region. It's a zone of calmness and serenity. तो इसकी वजह से आप देखो कि जहाज यहाँ पर आके फंस जाता था क्योंकि ये विंड्स चले जाते थे, तो ये जहाज यहाँ पे ऐसे अटक जाता था, बहुत धीरे 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 होता था. That's why people always feared to cross the equator. because उनको लगता था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब थे तो उनको डर लगता था कि अगर इक्वेटर तक जाते हैं तो जहाज फिर रुक जाता है, आगे चलता नहीं है. आगे कहीं और जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि पानी नहीं है, or there is some other danger lies ahead. Do you get it? That is trade winds, and this is the intertropical convergence zone, doldrum, equatorial westerly. ये सारे टर्म आप समझ में आ रहे हैं? Very good. Now let's take a look at some more terms. First term is the horse latitude. And the second term
चलो सेकंड थोड़ी देर में आएंगे। हॉर्स लैटिट्यूड क्या है? एट सब ट्रॉपिकल हाई 30 degree north and south, how is the atmospheric condition? The wind is sinking over those locations because there's high pressure winds. Do you get it? तो क्या होता था कि जब जहाज या शिप इन लोकेशंस पे आता था, सेल शिप्स ही होते थे, जब ये 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ पे आता तो इनके ऊपर हवा का दबाव पड़ने लगता। You understand that? Because the wind is pushing the ship as if it is pushing the ship down. और शिप की अपनी कोई ब्लड प्रेशर तो है नहीं, it will feel the pressure. Do you understand that? As a consequence of that, what happened was that the ship started sinking. तो नीचे जाने लगती थी ship, it would start sinking. तो जो लोग होते थे वहाँ, men, women and children, they used to get scared. उनको लगता था कि पानी में अब ship डूब जाएगी। तो खुद को बचाने के लिए वो क्या करते थे? Now this would look very inhuman, but they would throw away the horses from the ship into the ocean. याद रखो, जान पे बन आई तो आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, ठीक है? अभी जो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है ना, अगर मैं ये बोल दूं कि एक ही सीट है, आपको चाहिए कि बेस्ट फ्रेंड को दे दूं, तो बिल्कुल लपक के ले लोगे। फ्रेंडशिप तार तार रह जाएगी अपनी जगह, ठीक है? तो anyhow, look here very carefully. So as you threw the horses away, then obviously the weight would reduce, and as a consequence of it, the ship would start rising. That's why these locations are known as horse latitudes. Why horses? ऐसा क्या है कि घोड़ा लेकर कौन जाता है? The point is that in those times, horses were the most important thing. आप agriculture करो, horse you can use that. In warfare, you can use horse. In police administration, you would require horse. In royal treatment, you would require horse. Everywhere, think of anything, horse was for economic, social and political purposes. It was used. इसलिए हॉर्स में ट्रेड सबसे ज्यादा होता था। और दूसरे किस चीज में होता था? गोल्ड। डू यू गेट इट? तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हॉर्सेस बाहर फेंक दो, या गोल्ड बाहर फेंक दो, या जो पीने का पानी है वो बाहर फेंक दो। क्या करोगे आप? हॉर्सेस। डू यू अंडरस्टैंड दैट? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड। अब एक चीज देखो, as I told you, when there is no frictional force, the winds would blow at great speed. If you go into the southern hemisphere, you will find that there is very less presence of land. There is very less presence of land in the southern hemisphere. In fact, 90% of all the landmass lies in the northern hemisphere. Especially इस latitude के location में अगर आप देखोगे, means 40 degrees south, 50 degrees south and 60 degrees south. उसके बाद आपको अंटार्कटिका मिल जाए, यहाँ पे कोई लैंडमास ही नहीं है. If that's the scenario, इधर कोई लैंडमास ही आपको नहीं मिलेगा, इस इलाके में कोई लैंडमास नहीं मिलेगा. उसके बाद अंटार्कटिका. Do you get it? If that's the scenario, then winds would blow at great speed in this location. And between 30 to 60, what kind of winds blow? Westerlies. Remember? यहाँ पे trade winds है, यहाँ पे polar easterlies है, यहाँ पर क्या है? Westerlies. Now these westerlies, they blow with great speed at all these three latitudes. You understand that? Therefore, इनका कुछ नाम दिया गया. At 40 degrees south, they are known as roaring 40s. At 50 degrees south, they are known as furious 50s. And 60 degrees south में इनको बोलते हैं screaming 60s या shrieking 60s. अब ये सोच के देखो कि 40 डिग्री पे दहाड़ की तरह, जैसे शेर की दहाड़ होती है ना, वैसी आवाज आने लगती है विंड्स की, वो इतने तेज होते हैं. फ्यूरियस मतलब वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं विंड्स, ऐसे समझ लो. 50 डिग्री में और 60 डिग्री में तो आपकी चीख निकल ही जाएगी. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्क्रीमिंग 60s. और श्रिकिंग 60 में आप कांपने लगोगे, इतनी विंड की स्पीड होती थी. इसलिए लोग डरते थे आगे जाने में, क्योंकि तब साइंस तो था नहीं, ऐसा था नहीं जीपीएस है
या कुछ है, लोकेशन दे दो अपना तो उससे पता लग जाएगा कहाँ पर है, कुछ भी नहीं था उन दिनों में, सिर्फ एक कंपस था, नेविगेशनल कंपस, और उसके बेसिस पे लोग जाते थे रिस्क उठा। इसलिए जो वॉयज करते थे मिडिल एजेस में उनको सबसे ज्यादा रिवॉर्ड दिया जाता क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिस्क उठा। यू अंडरस्टैंड दैट? तो this is what the terminology is, the second terminology. Roaring 40s, furious 50s and screaming 60s, these are actually westerns. अब देखो एक चीज यहाँ पे थोड़ा मतलब हमको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अपनी और पॉलिश करनी पड़ेगी. As I told you that this is the intertropical convergent zone. You understand that now? This is nothing but the equatorial low pressure belt, and this is the subtropical high 30-degree north. This is the subpolar low 60-degree north, and this is the polar high 90-degree north. ठीक है, वैसे इधर भी आपको मिलेंगे. This is the subtropical high 30-degree south. This is the subpolar low 60-degree south, and this is the polar high 90-degree south. अब एक चीज देखो, remember during 21st of June the sun rays are directly over the Tropic of Cancer. It means the Tropic of Cancer, remember the sun rays fall directly over there. तो जहां पे वो sun rays directly fall करेंगे, there the temperature would rise. So the sun is moving to the north on 21st of June. On 22nd of December, the sun is moving to the south. Actually, the sun is neither moving. It is neither moving nor it is intending to move. It is Earth's relative position with respect to sun on its orbital plane. That's making this kind of change. ठीक है? तो ये जितने भी प्रेशर बेल्ट हैं, ये सारे प्रेशर बेल्ट नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं when sun is towards the north. When sun is towards the south, all the pressure belts shift to the south. तो जैसे कि इसका लोकेशन समझ लो 0 डिग्री है, तो जब नॉर्दर्न समर्स होंगे, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होंगे, ऐसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होंगे, तो हो सकता है ये ITCZ हो जाए, तब सब ट्रॉपिकल हाई हो सकता है ये हो जाए, सब पोलर लो ये हो जाए, पोलर हाई भी थोड़ा और खिसक जाए. You understand that? And if the pressure belts move, the wind systems will also move with it because it's a complete set. समझ में आ रहा है? अगर ये मूव किया नॉर्थ की तरफ, ITCZ मूव किया, तो ये भी मूव करेगा नॉर्थ की तरफ. सब ट्रॉपिकल हाई नॉर्थ, सारे प्रेशर बेल्ट्स नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे क्योंकि वो सन से बने हुए हैं, थर्मल हीट की वजह से. ठीक है, तो ये समर सिचुएशन हो गई. ड्यूरिंग द विंटर सिचुएशन दिस वुड हैपन. समझ में आ रहा है ना? During the winter situation, what would happen? All the pressure belts will shift to the south. ये साउथ की तरफ शिफ्ट हो गया, ये भी साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 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 और ये भी साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. Do you understand that? So during summers, all the pressure belts shift to the north. During winters, all the pressure belts shift to the south. मतलब ये जो 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ, ये सब जो लोकेशन मैंने आपको दिखाई थी, वो ना तो समर की है और ना तो विंटर की. तो कौन सी है? इक्विनॉक्स. तो ये वाला जो डायग्राम हमने देखा है, ये वाला डायग्राम जो हमने देखा है, वो किस चीज का डायग्राम है? इक्विनॉक्स. यू अंडरस्टैंड दैट? ये बात क्लियर हो गई? अब एक और चीज देखो. ऐसे देखो. So can we say so that from the IPC there will be at the equator? Over the equator, not at the equator. It is actually 5 degree north, 5 degree south. Over the equator, not at the equator. Okay, look here. This is the ITCZ. This is the ITCZ. This is the subtropical high north. This is the subpolar low north, and this is the polar high. Similarly, subtropical high south, subpolar low south, and this the polar high.
देखो यहाँ से कौन से विंड्स है यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स, ये कौन से हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड्स, ये कौन से हैं, वेस्टर्लीज, ये कौन से हैं, पोलर ईस्टर्लीज। यहाँ पर भी क्या होंगे, वेस्टर्लीज, और ये कौन से होंगे, पोलर ईस्टर्ली। रटने जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, अब क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट। बट ये एक आइडियलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब क्या है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अर्थ का सरफेस जो है वो यूनिफॉर्म है। ऐसा है क्या, देयर आर फ्रिक्शनल फीचर्स आल्सो, माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज, प्लेटूज, सब कुछ है। तो ये जो है, जैसे ऐसा लग रहा है स्केल रख के बनाया हुआ है, ऐसे रियलिटी में ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ फ्रिक्शन हो सकता है, तो ये ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है। यू अंडरस्टैंड दैट, ये भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। रियलिटी में ये ऐसे दिखेगा, वैसे ये भी ऐसे कुछ भी हो सकता है। The only thing is it will keep on coming from the west, और यहाँ पे भी ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब आपने वेदर रिपोर्ट देखा हो, जैसे कि अगर आप इंडिया का वेदर रिपोर्ट देख रहे हो, if you look at the weather pattern, तो आपको ऐसे दिखेगा विंड कुछ भी कैसे भी रैंडम डायरेक्शन में। देखा होगा जो मैप आप देखते हो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो कंसिडरिंग द फ्रिक्शनल ड्रैग। ये बच्चों वाली अंडरस्टैंडिंग है कि ये ऐसे ऐसे होगा, समझ में। एक्चुअली में रियलिटी में कुछ ऐसा होगा, कियोस दिखेगा ये। पर अगर मैं यही पिक्चर आपको पहले दिखा देता तो आपको समझ ही नहीं आता ये हुआ कैसे। अब समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, बिकॉज इट इज ड्यू टू फ्रिक्शनल ड्रैग। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ट्राई सेलुलर मेरिडियनल मॉडल क्लियर हो गया, डन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक चीज देखो, that as the air is rising, we know it cools adiabatically, and then its relative humidity keeps on increasing so much so that it finally becomes saturated and thereafter super saturated, and when it becomes super saturated it forms what, clouds, and clouds yield what, rainfall। रेनफॉल के लिए जो एक जेनेरिक टर्म यूज होता है, दैट इज प्रेसिपिटेशन। Precipitation includes both rainfall and snowfall and other minor forms like sleet, hail, इस तरीके की चीज। ठीक है, इन सब के लिए जो कॉमन टर्म यूज होता है वो क्या है, प्रेसिपिटेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, कॉमन टर्म यूज होता है डेन्यूडेशन फॉर इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। तीनों को मिलाकर अगर एक टर्म यूज करेंगे तो दैट इज डेन्यूडेशन। तो वैसे प्रेसिपिटेशन टर्म किसके लिए यूज होता है, फॉर रेनफॉल, स्नोफॉल एंड अदर माइनर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, यहाँ पर हम जाएं, ये क्लाउड फॉर्मेशन हम देखें, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स देखें, टाइप्स ऑफ रेनफॉल देखें, उससे पहले हमको समझना पड़ेगा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन। गॉट इट? एंड व्हाट इज कंडेंसेशन बाय द वे? कंडेंसेशन इज द retransformation of water vapor into water droplets or ice crystals। देखो, वाटर वेपर को आइस में अगर आप बदल दोगे तो उसको कंडेंसेशन नहीं कहते एक्चुअली, बट ज्योग्राफी में कंडेंसेशन एक ब्रॉड टर्म है। ज्योग्राफी में हमेशा जेनेरिक टर्म्स यूज किए जाते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन। कंडेंसेशन इंक्लूड्स बोथ इन ज्योग्राफी the conversion of vapor into water droplets, the conversion of vapor into ice crystal, both, for both we use the term condensation। do you understand that? तो कंडेंसेशन कब होगा? For condensation two conditions should satisfy। first is that the air should be super saturated, it means the relative humidity should be more than 1 or more than 100%, ये होना चाहिए। और दूसरा, कंडेंसेशन के लिए एक सरफेस का होना बहुत जरूरी। इफ देयर इज नो सरफेस देयर विल बी नो कंडेंसेशन। रुकेगा कहां पानी, या आइस क्रिस्टल। डू यू गेट दैट? सो देयर हैज टू बी अ प्रेजेंस ऑफ सरफेस। अब एक चीज देखो, इट्स सपोज मेनी टाइम्स यू माइट हैव सीन दिस, कि आपने एक ग्लास लिया, लेट्स अज्यूम that this glass is made out of steel, और इसमें आपने ठंडा पानी भर दिया, बिल्कुल एकदम चिल्ड वाटर, ये आपने भर दिया इसमें। ठीक है, और इसको आपने क्या किया, डाइनिंग टेबल पे रख दिया थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बाद अगर आप आओगे तो व्हाट वुड यू फाइंड? यू वुड फाइंड कि इसके ऊपर पानी जमा हो गया। देखा आपने, ये इसके ऊपर पानी जमा हो गया। ये क्यों हुआ? देखो, जैसे अंदर ठंडा पानी है तो कंडक्शनल हीट ट्रांसफर हुआ और बाहर का सरफेस क्या हो गया, ठंडा हो गया।
Now the air that comes in contact with that cold steel glass, its temperature would drop. As its temperature would drop, its relative humidity would increase. As its relative humidity would increase, then what would happen? It would become first saturated, then supersaturated. The moment it becomes supersaturated, first condition fulfilled. Second condition क्या चाहिए? Surface. और surface कहाँ पे है? ग्लास खुद एक surface है, तो उसके बाहर आप देखोगे पूरा पानी जमा होने लगेगा और वो ग्लास थोड़ी देर बाद आप उसको हाथ लगाओगे तो there would be water in your hands. Do you understand that? Now my question to you is कि ये वाला फिनोमिना समझ में आ गया? सबने देखा भी होगा ये, ठीक है? This would be more common during summers or winters. This would be more common during summers or winters. Sure. 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 Ask me one more time, final time. Sure. Summers. During the rainy season. है ना? Because the moisture in the air would be maximum during the rainy season. या मानसून के टाइम पे, ठीक है? तो अगर आपको बोलना है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? लेट समर. ठीक है? अगर हम डिवाइड करें पूरे को समर और विंटर में, फिर तो समर बोल सकते हो क्योंकि वो समर मानसून है. एक विंटर मानसून भी होता है जो तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में आता है. ठीक है? समर मानसून पूरे इंडिया में, मोस्ट ऑफ इंडिया में समर मानसून होता है, जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं. एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, वो तमिलनाडु के स्ट्रिप पे आपको मिलेगा और असम में कुछ एरियाज में मिलेगा आपको नॉर्थ ईस्ट मानसून. ठीक है? पर सबसे ज्यादा कब होगा? रेनी सीजन में, क्योंकि रेनी सीजन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा होती है. कपड़े सूखते सबसे मुश्किल से कौन से सीजन में? रेनी सीजन में. क्यों? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है एयर में. ठीक है? तो देखो विंटर में भले ठंड होती है लेकिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. मतलब हीट का मतलब सन के रेज में वो पावर नहीं होती जो रेनी सीजन में होती है. स्टिल रेनी सीजन में ज्यादा टाइम लगता है सूखने में व्हेन कंपेयर्ड टू विंटर सीजन, क्योंकि एयर का कंडीशन कैसा है वो भी देखना पड़ेगा. एयर थोड़ा ड्राई होता है उस समय. और जैसे मैंने आपको बताया, जब आपको भूख लगती है आप जल्दी खाते हो. कुछ लोग तो पूरे टाइम जल्दी खाते हैं, बट फिर भी भूख लगती है जनरली आप जल्दी खाते हो. पर जैसे जैसे आपकी जो आपकी भूख है वो शांत होती रहती है तो आपकी स्पीड भी थोड़ी थोड़ी घटती रहती है. ठीक है? मैं मतलब पेट की भूख की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं. कुछ आंखों की भी भूख होती है, देखा है ना आपने, बहुत सारा ले लेते हैं, खा नहीं पाते फिर. But anyhow, is this thing clear to everybody? चलो अब हम समझते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन. फर्स्ट form of condensation is dew. Second form of condensation is frost. Third form of condensation is fog. Fourth form of condensation is mist. Fifth form of condensation is cloud. ठीक है? तो ड्यू से शुरू कर. ड्यू कैसे होता है? Suppose it is the cold ground surface. How it has become cold? Due to outgoing terrestrial radiation. ठीक है? Now, in its contact comes a warm and moist air parcel. अभी तक मैं क्या बोलता था? Warm air parcel, cold air parcel. और आज से मैं क्या बोलूंगा? Warm and moist air parcel, cold and dry air parcel. Because hotter the air, greater it is moisture holding capacity. ठीक है ना? तो वार्म एंड मॉइस्ट एयर पार्सल मतलब इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी होगा. अब आप मुझे एक बात बताइए थोड़ा लॉजिक लगा के, इस एयर पार्सल को अगर मैं दो सेक्शन में तोड़ दूं, अपर एंड लोअर सेक्शन में, मॉइस्चर कंटेंट कहाँ ज्यादा होगा? अपर सेक्शन या लोअर सेक्शन में? कहाँ ज्यादा होगा? लॉजिक लगाओ. लोअर सेक्शन में. क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा है ना वहां पे. वाटर वेपर ज्यादा कहाँ होता है? लोअर सेक्शन में. एज यू इंक्रीज द हाइट द एयर बिकम्स मोर एंड मोर रेरिफाइड. ठीक है? तो यहाँ पे ज्यादा होगा. अब एक चीज देखो, इफ दिस इज कोल्ड surface, then can you understand this, that this warm air parcel would start losing heat to the surface, and after some time इसका टेम्परेचर समझ लो कितना हो गया? 10 डिग्री सेंटीग्रेड. और इसका टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहा. ये तो हम देख चुके हैं. दिस इज नोन एज व्हाट? टेम्परेचर इन्वर्जन. विद इंक्रीज इन हाइट देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर. बट अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, उस समय हम मॉइस्चर को तो नेग्लेक्ट करके चल रहे थे. आज हम मॉइस्चर की भी बात करें. जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा तो क्या होता जाएगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज यू कैन इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन टू वेज, बाय एडिंग मॉइस्चर और बाय सब्सट्रैक्टिंग
टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग आउट टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली। इफ दैट हैपेंस तो आप समझ सकते हो कि इसका टेम्परेचर गिरता जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता जाएगा RH वैल्यू क्या होती जाएगी, चढ़ती जाएगी, एंड देन RH वुड बिकम व्हाट, इक्वल्स टू 1, इट मींस सैचुरेटेड। द मोमेंट RH becomes more than 1, it is super saturated। और कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए, दो कंडीशंस चाहिए, सुपर सैचुरेशन और सरफेस। सुपर सैचुरेशन हो गया, सरफेस है क्या, सरफेस के ऊपर ही तो रेस्ट है, डू यू अंडरस्टैंड दैट। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, वाटर ड्रॉपलेट्स विच वुड बी कंडेंस्ड। कहीं पे भी मिलेगा आपको, रॉक्स पे मिलेंगे, कार पे मिलेगा आपको, बाइक के ऊपर मिलेगा, बाइक की सीट के ऊपर आपको, घास पे मिलेगी, ग्रास ब्लेड्स पे, ठीक है। एंड दिस वुड बी वेरी कॉमन ड्यूरिंग विच सीजन, winter season, because the ground has to be really cold, for that the nights has to be really longer, so that the outgoing terrestrial radiational losses are great, do you get it। इसलिए आपको याद होगा जब विंटर में सुबह स्कूल जाते थे तो ऐसे घास पे हाथ मार दिया, कुछ भी कर दिया, गीले हो जाते थे ना हाथ। बच्चे ये चीज करते होंगे, आप देखो जूते के नीचे ऐसे देखा करते थे गीला हो रहा है कि नहीं। दिस इज नथिंग बट ड्यू, और dew is a form of condensation। dew point temperature is the temperature at which the air becomes saturated। दो चीजें, अलग चीज। फ्रॉस्ट बिल्कुल ऐसा ही है, बट इसमें क्या हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा कोल्ड है, दिस इज अ कोल्डर सरफेस देन दिस वन आल्सो, एंड इफ दैट हैपेंस देन यू कैन अंडरस्टैंड द warm and moist air parcel when it would come in contact with this very cold, ऐसे करते extremely cold surface, समझ लो कोई ग्लेशियर है ये, you understand that, then here you can understand the condensation that would take place will not take place in the form of water droplets, rather it would take place in the form of ice crystals, you get it। बिल्कुल ड्यू जैसा ही होगा, बट जो कंडेंसेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, आइस के फॉर्म में होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी में वेपर को चाहे आप वाटर में कन्वर्ट कर दो चाहे आइस में, बोलते क्या है उसको, कंडेंसेशन। तो ये क्या होगा, आइस के फॉर्म में होगा, जबकि यहाँ पर कैसे हो रहा था, वाटर के फॉर्म में हो रहा था। जब ये आइस के फॉर्म में होगा, दिस इज नोन एज फ्रॉस्ट, यू अंडरस्टैंड दैट। एक बात मुझे बता, आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट, यू टेल मी यस और नो टू दैट। ड्यू इज वेरी कॉमन ड्यूरिंग विंटर सीजन, फ्रॉस्ट इज वेरी कॉमन ड्यूरिंग विंटर सीजन, सही होगा ये भी। ड्यू इज वेरी कॉमन विद इन द ट्रॉपिक्स, frost is very common outside the tropics, at higher latitudes it would be frost, at lower latitudes it would be dew, dew would be very common at lower altitudes, frost would be very common at higher altitudes, because altitude mimics latitude, I told you this in the class। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ गया ये दोनों। अब देखो फॉग क्या है, फॉग, मिस्ट और क्लाउड एक्चुअली एक ही चीज, they are, fog is a cloud near ground, समझ में आ रहा है। and what is a cloud, a cloud is an aggregation of water vapor, water droplets and ice crystals, तीनों को ऐड कर दो तो आपको एक नेबुला की तरफ मिलेगा, that is actually a cloud। जब ये क्लाउड ग्राउंड के लेवल पे होते हैं और नियर ग्राउंड होते हैं, we are calling it fog। समझ में आ रहा है। तो fog कुछ ऐसा दिखेगा, ये होगा, समझ लो brown, this is fog, got it, and it contains what, it contains water vapor, it contains ice crystals, and it might also contain some water droplets। इसे पिछले वाले डायग्राम में चले जाओ, यहाँ पे तो बन गया, अब यहाँ पे भी तो हो सकता है कंडेंसेशन हो जाए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर यहाँ की इस पूरे सेक्शन की क्या हुई, becomes more than 100%, super saturated, and you need a surface। सरफेस क्या हो सकता है यहाँ पे, the hygroscopic nuclei, it means the dust particles। dust particles hygroscopic nuclei क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसी के अराउंड कंडेंसेशन हो सकता है फ्री एयर में, फ्री एयर में सरफेस वही है बस, you understand that। so this is how you would get the cloud, fog। समझ में आ रहा है। अब अगर समझ लो साथ में कोई फैक्ट्री लगी हुई है, यहाँ से बहुत धुआं निकलता, so it would throw aerosols
in the atmosphere. Aerosols का मतलब समझते हो, small pollutants, ऐसे सोच के देख लो, ठीक है, या स्मोक के स्मॉल हिस्से, वो भी जो होंगे वो डस्ट की तरह ही होते हैं. That will create a lot of breathing problems also in cities like Delhi. तो आप देखो अगर वो मिल जाए यहाँ पर तो कंडेंसेशन और होगा, लेकिन ड्यू टू देयर ब्लैक कलर the fog will also appear blackish, and that's why such a fog is known as smog. Smoke plus fog. Smog. समझ में आ रहा है? फॉग कौन से सीजन में ज्यादा कॉमन होंगे? विंटर सीजन. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, इफ आई एम ट्राइंग टू मेक आइडियल कंडीशंस फॉर ड्यू फॉर्मेशन, ठीक है, डू आई नीड विंटर सीजन और समर सीजन? फर्स्ट विच सीजन? विंटर सीजन, लॉन्ग विंटर नाइट्स, पहले कंडीशन. आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूं, ड्यू तो कभी भी बन जाएगा, बट आइडियली कब बनेगा? लॉन्ग विंटर नाइट्स. सेकेंड, a lot of moisture in the air or less moisture in the air? No moisture. एयर की बात हो रही है, एयर पार्सल की नहीं. Lot of moisture in the air or less moisture in the air? No moisture. Moisture होगा तो the moisture will trap the outgoing terrestrial radiation. It will radiate it back to the Earth's surface, not allow the Earth's surface to cool very rapidly. You understand that? Third, do I need clouded sky or cloudless sky? Cloudless sky, because clouds will also have water vapor. They will trap the outgoing terrestrial radiation, re-radiate it back towards the Earth. Do you understand that? Would I want stable air or unstable air? Means static air or moving air? Static. अगर रुकेगा ही नहीं बहुत देर तक तो ये चेंज होगा क्या, एक्सचेंज होगा कैसे? So there are 4 ideal conditions for dew formation. ध्यान देना इन पर. First is long winter nights. Second, clear sky. Third, dry air, means moistureless air, and stable air. If these 4 conditions are met, dew would be formed. You understand that? यही ideal conditions होंगे आपके इसके लिए भी. यही ideal conditions होंगे आपके frost के लिए भी. Do you get it? Now what is mist? देखो, fog समझ में आ गया, smog समझ में आ गया, mist क्या चीज होती है? देखो, mist is actually a less dense fog. That's it. Sometimes you would see misty mornings. Poets would write this. Misty mornings. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? It's a foggy morning. ठीक है. कई बार देखो climatic टर्मिनोलॉजी को यूज करके लिटरेचर में अपनी बात कही जाती है, isn't it? और जियोग्राफिकल टर्म्स को यूज करके लिटरेचर में बात करते हैं. लाइक से फॉर एग्जांपल, योर हेयर इज लाइक अ रिवर, ऐसे बात करते हैं ना. तो यू यूज दैट टू एक्सप्लेन सम अदर टर्म. सो समटाइम्स व्हेन यू हैव टू से दैट आई डोंट अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, I do not have a good understanding of what you are saying. तो अच्छी इंग्लिश में इसको बोलेंगे I have the foggiest. आगे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं. I have the foggiest means मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहे हो, because fogs are unclear things. So you get it? But anyhow, coming back to geography. तो ये fog हो गया. Mist क्या हो गया? Mist is a less dense fog. As the sun rises, the ground temperature increases, and there is transfer of heat. Relative humidity drops, condensation stops, and the fog disappears. समझ में आ गया? What are clouds? Clouds are nothing but they are upper air. ठीक. अब clouds के कुछ types होते हैं, but उन type पे जाने से पहले एक और important concept जो हमको समझना. Again, concept of physics, latent heat. एक तो हमने देख लिया specific heat. Specific heat means the heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius. Latent heat क्या है? Latent का मतलब क्या? Hidden. Okay, so it means the heat is hidden in the vapor. That's latent heat. ठीक है? देखो ध्यान से. Suppose this is a water surface. Sun rays are incident over it. ठीक है? And as a consequence of it, the water droplets on attaining heat
they would undergo change and they would vaporize. तो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो ऐसा होगा, ये वाटर ड्रॉपलेट है, ऑन अटेनिंग हीट इट वुड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, और वेपर जो होगा आपको पता है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा वाटर ड्रॉपलेट से हमेशा, बिकॉज इट हैज अब्सॉर्ब्ड हीट, यू अंडरस्टैंड दैट। तो वो हीट एनर्जी अब कहाँ है, वेपर के अंदर है, पर क्या आप देख सकते हो उसको, नहीं देख सकते, so it's hidden inside the vapor. This heat energy is known as the latent heat of vaporization. You understand that? Latent heat of vaporization will always create a cooling effect. क्यों? क्योंकि हीट अब्सॉर्ब कर रहे हो, जब आप हीट अब्सॉर्ब करोगे कहीं से तो उस एरिया में कूलिंग इफेक्ट होगा या नहीं? Are you understanding this? तो इसलिए जब भी इवेपोरेशन होगा कहीं पे भी, it would create a cooling effect. You understand that? Like say for example, धूप से आप आए हो बाहर से, you're perspiring profusely, पसीने में लथपथ हो आप, और आप जैसे थोड़ी देर बैठते हो, then the sweat evaporates. As the sweat evaporates, you feel a cooling effect on your body. ठीक है? So vaporization always creates what? A cooling effect, because there is absorption of latent heat. Such latent heat is known as latent heat of vaporization. Now this water vapor would actually now rise, because we said hot air rises, और air में water vapor भी तो होगा. So as it rises, it cools adiabatically, and as it cools, इसका मतलब क्या होगा? Air parcel cools means what? Its relative humidity keeps on increasing. It would become saturated and then super saturated. When it would become super saturated, and if there are enough number of dust particles available, it will form what? It will form clouds. Do you understand that? Cloud में होगा क्या? This water vapor would get converted into water droplet. होगा एक्चुअली ऐसा, थोड़ा अगर इसको माइक्रो लेवल पे देखो तो देखो कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है? जैसे वाटर ड्रॉपलेट है, वो अब्सॉर्ब करेगा हीट, तो वो फैलता रहेगा पहले, फिर वो गैस में बदल जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है? फिर वो जैसे ऊपर जाएगा वो गैस का गोला छोटा होता रहेगा, समझ रहे हो? और वो छोटा होते 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 फिर वो लिक्विड में बदल जाएगा, और ऊपर ले जाओगे तो और छोटा हो जाएगा और सॉलिड में बदल जाएगा, आइस क्रिस्टल में बन जाएगा. You get that? That's what happens. So look here, the vapor gets converted back into water droplet, and when there is again reconversion, तो वेपर को क्या करना पड़ेगा? हीट रिलीज करना पड़ेगा ना, तभी तो वाटर में होगा. So there would be release of heat. This heat is known as the latent heat of condensation. Do you understand that? There is something called latent heat of vaporization. There is something called latent heat of condensation. So whenever there is condensation, there would be what? There would be release of latent heat. तो जैसे कि समझ लो कोई foggy day है, it's a foggy day. जनरली लोगों की क्या सोच होती है, वो घर से बाहर देखते हैं, दरवाजा खोल के, अरे इट्स अ फॉगी डे, तो चलो एक और जैकेट पहन लेते हैं, एक और स्वेटर पहन लेते हैं, सब कुछ करके बाहर जाते हैं. बट अ फॉगी डे इज अ रिलेटिवली वार्मर डे. समझ में आ रहा है? बिकॉज देयर इज कंडेंसेशन दैट हैज टेकन प्लेस, एंड कंडेंसेशन ऑलवेज इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ हीट. सो in fact you have to get rid of one of the layers from your body if it is a foggy day. बट जैसे मैंने आपको बताया था, रियलिटी और परसेप्शन दोनों के बीच का फर्क, हमें देख के लगता है कि हाँ ये ज्यादा ठंड है, देख के लगता है कि हाँ ये बहुत इंटेलिजेंट हो, है कि नहीं क्या पता. Got it? तो अब क्लाउड्स के फॉर्म देखते हैं. क्लाउड्स कैन बी क्लासिफाइड either on the basis of their appearance or on the basis of their height or altitude. On the basis of appearance, there are three types of clouds. First, तो आप जानते ही हैं, cirrus clouds. Remember, they are shown with the symbol Ci. Cirrus cloud. इनका एक feathery appearance होता है. Feathery appearance, fibrous appearance, ऐसे कुछ आप सकते. दूसरे तरीके के क्लाउड्स होते हैं, वो शीट की तरह होते हैं, जैसे कोई शीट बिछी हुई हो आसमान. They are known as stratus clouds, after stratus, layers, sheets. They are indicated by the symbol ST, stratus.
And then comes the cumulus clouds, जिनका एक globular appearance होता है, reminiscent or similar to a cauliflower, गोभी की तरह अगर आप देखोगे, ठीक है, flat base and a curled dome, ठीक है, ऐसे होते हैं गोभी, इसी टाइप की समझ लो. This is known as cumulus, indicated by the symbol Cu. ठीक है. अब एक टर्म होता है, याद रखो, इस टर्म को कहते हैं निम्बस. निम्बस जब भी जुड़ जाए किसी क्लाउड के साथ, इसका मतलब बैड वेदर. बैड वेदर मीन्स देयर वुड बी रेनफॉल, lightning, thunderstorms. Do you understand that? एकदम हाई लेवल पे हो नहीं पाएगा वैसे, क्योंकि उतने ऊपर जाते जाते तक मैक्सिमम वाटर वेपर विल रिटर्न बैक टू अर्थ. So there you would have some ice crystals only. So there would not be any heavy rainfall or thunderstorm at very high levels. Do you understand that? But at intermediate levels that can, at low levels that can. Which nimbus is added to stratus, it becomes nimbostratus. Okay? And when nimbus is added to cumulus, it becomes cumulonimbus. This is shown by the symbol Cb. All the clouds, the most dangerous are the cumulonimbus clouds. Okay? Because this cumulonimbus clouds cause heavy rainfall, and very heavy rainfall actually technical terms में उसे कहते हैं torrential downpour. Light rainfall is known as drizzle. ठीक है, दोनों को कंबाइन करके कभी कभी रेनफॉल भी बोल देते हैं. Cumulonimbus clouds are very common near the tropical cyclones and at the equatorial zones. Equatorial area में cumulonimbus clouds common, हर दिन बन जाते हैं. ठीक है, and these clouds they reflect a lot of sunlight. That's why the equator has a high albedo. मतलब अगर आप स्पेस से अर्थ को देख रहे हो तो इक्वेटर वाला एरिया सबसे ज्यादा चमकेगा, because there is a lot of reflection, और पोल वाला एरिया बहुत चमकेगा because there is ice cover, so the reflectivity index is very high. Do you understand that? But जो सब पोलर लो और सब ट्रॉपिकल हाई वाला एरिया है वो थोड़ा डल रहेगा कंपैरिजन टू दीस टू. अच्छा, ये क्लियर हो गया. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइट हम कैसे क्लाउड्स को डिवाइड कर सकते हैं. सो आई एम जस्ट टेकिंग few reference point. Suppose this is the mean sea level, then I go up to say 2000 meters, it means 2 kilometers. Then from here suppose I go to 6000 meters, which is 6 kilometers, then up to 12,000 meters, which would be 12 kilometers. I am where? I am in the troposphere. Remember tropopause की height क्या है? 6 to 16, 8 to 18. ठीक है, तो इसका अगर आप एवरेज लोगे तो 10-11 के आसपास कहीं कहीं बनता है. But I told you very high clouds, some of them are also present in lower stratosphere, which are cirrus clouds. ठीक है, इसको हम एक हाइट के फॉर्म में ऐसे ले लेते. अब देखो यहाँ पर कौन से क्लाउड्स बनते हैं, लो क्लाउड्स कौन से. पहला हो गया क्यूमुलस. ग्राउंड पे तो कोई क्लाउड नहीं बनेगा बिकॉज दैट वुड बी फॉग देन. ठीक है, सेकेंड स्ट्रेटस, देन combination of stratus and nimbus, which would be nimbostratus. This is stratus, this is cumulus. There is एक होगा cirrostratus, वो कैसा होगा, वो cumulostratus और stratocumulus कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, which would be a combination of the stratus and the cumulus. This is known as stratocumulus. Some books might also write cumulostratus, कुछ भी बोल दो इसको.
ठीक है. एंड देन देयर इज वन मोर cumulonimbus, we'll talk about that in a moment. जो मिड साइज क्लाउड्स होते हैं या मिड हाइट पे जो क्लाउड्स होते हैं उनमें एक हो जाएगा पहला ऑल्टो क्यूमुलस एंड देन ऑल्टो स्ट्रेटस. निम्बस जनरली लोअर क्लाउड्स के साथ ही एसोसिएट होता है. ठीक है. द वर्ड ऑल्टो मींस मिड. ठीक है. जैसे एक गाड़ी आई थी ऑल्टो, बिग भी नहीं थी, छोटी भी नहीं थी, मिड साइज. ठीक है. तो ऑल्टो. एंड देन यू हैव गॉट द सिरस क्लाउड्स. सिरस के भी प्रकार हो सकते हैं, कुछ टाइप हो सकते हैं. एक इज सिरोक्यूमुलस. सिरस प्लस क्यूमुलस मतलब सिरस क्यूमुलस की तरह दिख रहा है. So this is cirrocumulus and then there could be cirrostratus. nimbus होगा नहीं वहां पे. ठीक है. So you have got cirrocumulus, cirrostratus, cirrus. ठीक है. ये जो cirrus clouds होते हैं they are responsible for the halo of the sun. halo of the sun क्या है देखो. जैसे आपने ऐसा कुछ देखा होगा, रिलीजियस फिगर्स को देखा होगा आपने कि वो कुछ ऐसा दिखाते हैं उनके पीछे स्टैचू में. बुद्धा हो गया, महावीर हो गया. देखा आपने. दिस शोज व्हाट एज इफ नॉलेज इज रेडिएटिंग फ्रॉम देम. ठीक है. तो सन को भी अगर हम देखेंगे तो सन भी कुछ ऐसा ही है. सन को अगर हम देखेंगे तो वो भी कुछ ऐसा ही है. सन के भी अराउंड आपको एक हैलो दिखेगा. understand that this halo is due to the reflection done by the cirrus. Okay. Cirrus clouds कैसे होंगे? They would be mostly made out of ice crystals and not water droplets. अब देखो एक क्लाउड होता है जो बहुत नीचे से शुरू होता है. इनफैक्ट इट इज द लोएस्ट ऑफ ऑल द क्लाउड्स but it has a huge vertical extent and it goes to a great height. Do you understand that? This cloud is known as the cumulonimbus clouds. ऐसे क्लाउड बनने के लिए क्या चाहिए? एयर को बहुत ऊपर तक राइज करना पड़ेगा. कन्वेक्टिव एयर करंट बहुत ऊंची जानी चाहिए और उसके लिए क्या चाहिए? एयर को बहुत गर्म होना पड़ेगा. Then only it will keep on rising because it will remain hotter than its atmosphere, its surroundings, sorry. It will keep on rising. समझ में आ रहा है ना? तो इसकी वजह से ये वाले क्लाउड्स जो हैं ये ट्रॉपिक्स में ही बनते हैं मोस्टली. एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एरिया में एक जगह पे बनते हैं. विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन. बट मोस्टली जनरली ये कहाँ बनते हैं? सारे ट्रॉपिक्स में बनते हैं. डू यू गेट दैट? सो इफ यू गो टू इक्वेटोरियल एरिया यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ क्लाउड्स. If you go to the tropical cyclones, you will find this type of clouds. This is the most dangerous of all the clouds. They are marked with thundering, lightning, and heavy torrential downpour. ये जो cloud burst होता है कई बार आपने सुना होगा, that is associated with the cumulonimbus clouds. Do you get it? तो एक चीज देखो, cumulonimbus clouds they have great vertical extent. इनकी height की बावजूद इनको लो क्लाउड इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि लो सेक्शन से शुरू होते हैं. At the top you will find they are like this. They have an anvil top. What are anvil tops? आपने देखा होगा the cobbler works on something like this. आपने देखा होगा जूते को उस पे चढ़ाकर वो उसकी सिलाई करते हैं. This is known as an anvil. ठीक है. तो इसका टॉप कैसा होता है? एनविल की तरह होता है. That's why it is known as anvil top. क्यों होता है? Because at this height there blows a very strong wind. Very strong wind. These winds are geostrophic winds. Remember the geostrophic winds? Good. Geostrophic winds. These winds are known as jet stream. ठीक है. They are known as jet streams. अब देखो ये जो cumulonimbus clouds हैं they are mostly associated with bad. जब भी हम कहते हैं कि वेदर खराब हो गया,
इसका मतलब there is lightning, thundering, heavy rainfall or torrential downpour. They are associated always with cumulonimbus. So on the basis of appearance, 3 cloud, cirrus, stratus, cumulus. ठीक है, और nimbus ऐड कर दिया मतलब bad weather. और on the basis of height, कितने सारे देख लो, 5, 2, 7, 3, ठीक है, it means cumulus, stratus, nimbostratus, stratocumulus, cumulonimbus. और इधर अगर आप देखोगे तो altocumulus, altostratus, cirrus, cirrocumulus, cirrostratus. ठीक है, और halo of the sun is because of cirrus clouds. तीनों की वजह से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि इसकी वजह से हो, किसी की भी वजह से हो सकता है, cirrus clouds की वजह से होता है. Cumulonimbus brings always bad. ठीक है, which time do we have? देखो ये, yes, go on. So you were discussing on the jet stream where there was a high pressure and a low pressure. It is strictly moving. It is just getting diverged in a straight direction. Jet streams again, one more time. सर अभी जब पिछले क्लास में जब jet stream डिस्कस कर रहे थे तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर नहीं, मैंने जेट स्ट्रीम डिस्कस किया ही नहीं है. जेट स्ट्रीम डिस्कस किया ही नहीं है. ठीक है, अभी तक जेट स्ट्रीम डिस्कस किया ही नहीं है. मैंने बोला जेट स्ट्रीम भी जियोस्ट्रोफिक विंड्स की तरह है, ये बोला है मैंने. जेट स्ट्रीम्स आर डिफरेंट. ठीक है, चलो नहीं था जेट स्ट्रीम का एग्जांपल हो. अच्छा चलो जेट स्ट्रीम में एक बार बता देता हूँ इस ब्रेड में, वो अच्छा होगा फिर. Look here, air is rising here. ठीक है, as air is rising between the tropopause and the rising air, यहाँ पे भी तो कुछ एयर होगा ना. तो ये ट्रोपोपॉज है, ये राइजिंग एयर है, हेडली सेल यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसके बीच में भी तो कुछ एयर होगा. तो ये जब यहाँ पे ऐसे राइज हो रहा है तो इस एयर को ये धक्के रुका है. Do you understand that? It is pushing the air right like this. तो यहाँ पे एयर जमा हो रहा है. Do you get it? Here there is accumulation of air because this air is being pushed. और यहाँ पे polar locations, अब देखो air is sinking. As air is sinking, it is creating a gap. As it is creating a gap, some of the air from above comes down to fill that gap. At the equator, the air is rising. It's pushing the air up, hitting the tropopause. Here, it is sinking. As it is sinking, it is creating some gap. So the air is coming down and trying to fill that gap. So here there is a pushing effect. Here there is a pulling effect. आप ऐसे सोच कर देख सकते हो. तो यहाँ पे एयर की कमी हो जाएगी, बट यहाँ पे एयर का accumulation होता रहेगा. So can I say this would be a zone of accumulation, isn't it? Whereas this would be a zone of scarcity, जहां पे air accumulate हो रहा, that is actually high pressure. ऐसे सोच कर देखो, air आ रहा है, वहां पे accumulate हो रहा है air, as air is diverging, तो air accumulate हो रहा है ना वहां पर पहले, तभी तो फिर spread हो रहा है. So it is a high pressure zone. Air जहां से rise हो रहा है, वहां पे air क्या vacuum create हो रहा है, so that is a low pressure area. समझ में आया? तो यहाँ पे between the cells and the tropopause over the equator, what kind of pressure would be created here? High pressure. समझ में आया? और यहाँ पर कौन सा होगा? Low pressure. ऐसे सोचो. यहाँ पे हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, ये ट्रोपोपॉज उसके ऊपर. यहाँ पे एयर राइज हो रहा है तो यहाँ पे एयर एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ से एयर जा रहा है, तो जहाँ पे एयर ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा एयर का. ऐसे सोचकर देख लो, यहाँ पे एयर कम होगा उसका प्रेशर कम होगा. सो दिस इज लो प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर. तो अब मैं हेडली सेल की भी बात नहीं कर रहा, तीनों सेल की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं ट्रोपोपॉज की बात कर रहा हूँ, मैं उसके बीच के दरमियान में जो जगह है उसकी बात कर रहा हूँ. Do you understand that? Now look here. The air would always blow from high pressure to low pressure, isn't it? और उस केस में क्या होगा? There is no friction. इस लेवल पे तो फ्रिक्शन नहीं होगा, बहुत कम होगा. So the air would blow very fast. And this is which hemisphere? Northern hemisphere. So the air would turn towards its right. और आपको पता है कि बहुत तेज ब्लो होगा तो बहुत जल्दी राइट की तरफ जाएगा. Faster the wind, greater is the deflection. समझ में आ रहा है? ऐसे सोचकर.
as this air is going like this, it will go like this. Actually, as it is going like this, it will go like this. समझ में आ रहा है? तो ऐसे सोच कर देखो, as this air यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो it starts blowing like this. You understand that? ऐसे दो लोकेशंस पे होता है, क्योंकि ये दोनों सेल के बीच का या तीनों सेल के बीच में दो गैप बन रहे हैं. समझ में आ रहा है? तो उन दोनों गैप्स में ऐसे एयर जल्दी से ब्लो करने लगा. And this is blowing from west to east. West to east. Similarly, southern hemisphere में भी वैसा ही होगा. West to east. यहाँ पे भी होगा ऐसा. West to east. अगर आपको southern hemisphere का नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो. ऐसे देखो. यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है. विंड ऐसे जाएगी यहाँ से. पर कौन सा हेमिस्फीयर है? सदर्न. तो किस तरफ मुड़ेगी? तो कौन सा डायरेक्शन हुआ? वेस्ट टू ईस्ट. नॉर्थ में क्या था? वेस्ट टू ईस्ट. यहां से जा रही तो ये इसका राइट हुआ, यहां से जा रही तो ये इसका लेफ्ट हुआ. ऐसे हो गए. समझ में आया? दोनों केस में क्या होगा? वेस्ट टू ईस्ट. ये विंड्स जो है इनकी हाइट होती है लगभग आप समझ लो 6 to 12 किलोमीटर के बीच में कहीं पे भी हो सकता है. These winds are known as the jet streams. There are two sets of them. First, the subtropical jet and then the polar jet. यहाँ पे भी होगा एक subtropical jet and the polar jet. These are upper air fast moving geostrophic winds. समझ में आ गया? These are jet stream. अब एक स्कॉलर थे, उनका नाम था रॉसबी. ऐसे होने चाहिए जेट स्ट्रीम्स अपर एयर में, ऐसे होने चाहिए ना, बट ऐसे ना होकर ऐसे हैं वेव्स की. So he said that these are actually Rossby waves. अपने नाम पे रख दिया कि Rossby waves हैं ये जेट स्ट्रीम्स. ये वेव्स क्यों बन रहे हैं? ये वेव्स इसलिए बन रहे हैं कि हमको ग्राउंड पे भी सोचना पड़ेगा हो क्या रहा है. रिमेंबर एट द सब ट्रॉपिकल. बहुत ज्यादा हो रहा है क्या आज के लिए? एक क्लास बस यहाँ पे क्लोज करेंगे. समझता हूँ ये थोड़ा सा हैवी है ये टॉपिक. देखो ज्योग्राफी है इतना प्यारा सब्जेक्ट, ठीक है. एक बार आप समझ लो, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं. जैसे कि पॉलिटी में आपको याद रखना है 6 months है, 3 months है, 40 days है, 14 days है, क्या है यहाँ पे? कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है. That's why geography is such a beautiful subject. और अगर आप देखोगे तो एक ही सब्जेक्ट है जिसको एवरग्रीन बोला गया है, and that is geography. जब से एग्जामिनेशन शुरू हुआ है आज तक अगर कोई सब्जेक्ट बहुत पॉपुलर है तो है ज्योग्राफी. सबके बीच में पॉपुलर है, वो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हो या नेचुरल साइंस के. एनीहाउ देखो, कमिंग बैक टू दिस, यू हैव द हेडली सेल, you have the फेरल सेल एंड यू हैव द पोलर सेल. और मैंने आपको बताया था सारे प्रेशर बेल्ट्स नॉर्थ और साउथ मूव करते हैं ड्यू टू द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन रेज. तो जब ये नॉर्थ मूव करेंगे और ये आपस में विंड भी ऐसे मूव कर रहे हैं, यू अंडरस्टैंड दैट? तो विंड जो मूव कर रहे हैं तो दे आर पुशिंग लाइक दिस. द ट्रेड विंड्स, लाइक फॉर एग्जांपल वेस्टर्लीज को देखो, वेस्टर्लीज आर गोइंग लाइक दिस, पोलर ईस्टर्लीज आर कमिंग लाइक दिस. इट्स एक्चुअली अ एंटायर एयर मास सिस्टम. Remember the air masses? So this is warm air mass, this is cold air mass. तभी तो फ्रंट बन रहा है सब पोलर लो पे. याद आ रहा है कुछ? फ्रंट कैसे बनता था? When two contrasting air masses collide against each other, तभी बनता था ना फ्रंट. वेरी गुड. ऐसे सोच कर देखो कि जब दो कंट्रास्टिंग एयर मासेस ऐसे कोलाइड हो रहे हैं तो वो आपस में उन विंड्स को भी तो ऐसे ऐसे करेंगे दोनों तरफ. समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो क्या होगा? वो विंड कैसी हो जाएगी? कर्व की तरह, वेव की तरह. यू अंडरस्टैंड दैट? दैट्स हाउ द रॉसबी वेव्स आर फॉर्म्ड. हुआ नहीं जो मैंने सोचा था क्लास में जितना आज कर लेंगे, कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल हैवी है. तो क्या करना है आपने, मैं बता देता हूँ. एनसीईआरटी पढ़नी है इन सेक्शंस की, ठीक है. और क्योंकि इंटीग्रेटेड शीट मेक्स मोर सेंस, तो जो अगली क्लास में आएंगे तब मैं आपको इंटीग्रेटेड शीट दूंगा, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ करना है इससे रिलेटेड. जैसे टाइप्स ऑफ रेनफॉल, टाइप्स ऑफ मॉइस्चर, साइक्लोन, ये सारी चीजें इकट्ठे एक जगह आपके पास रहे पढ़ने के लिए, तो इट मेक्स मोर सेंस रादर देन डिवाइडेड इनटू वेरियस शीट्स. ठीक है. एनसीईआरटी में ज्यादा फायदा होगा नहीं आपको पढ़कर, बट फिर भी आप रिवाइज करिए एंड दैट वुड बी सफिशिएंट. ठीक है. And if you can get access to my foundation notes, nothing like it. That's it for this class. Thank you very much.